दुर्गा सप्तशती। एकादश अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। ध्यानम। बालविद्युतिमिंदु किरीटां तुंगकुचां नयनत्रयुक्तां स्मेरमुखी वरदांकुशपाशा भीतिक्रा प्रभजे भुवनेशीम्। ऋषिरुवाच। देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्राः सुरा वह्निपुरोगमास्ताम् कात्यायनी तुष्टुवरिष्टलाभाद् विकाशवक्त्राब्जविकाशिताशा देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद। प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगत्स्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थित्या त्वयैत दाप्यायते कृत्स्नमलङ्घ्य वीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। विद्याः समस्तास्तव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैक्या पूरितमम्बयतत् का ते स्तुतिः स्तव्यप्रा परोक्तिया सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्ति प्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुत्येका वा भवन्तु परमोक्तया सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोस्तु ते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्योपरतो शक्ते नारायणी नमोस्तु ते सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तु ते सृष्टि स्थिति विनाशाना शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तु ते शरणागतदीनार्थ प्रत्राण परायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तु ते हंसयुक्त विमानस्थे ब्रह्माणी रूपधारिणी कौशाम्भक्षरिके देवी नारायणी नमोस्तु ते त्रिशूल चंद्राहिद्रे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तु ते मयूर कुक्कुटवृते महाशक्तिध्रेन्घे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमोस्तु ते शंखचक्रगदाशान गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तु ते गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोद्धृत्व सुंदरे वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तु ते नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तु दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राण सहिते नारायणी नमोस्तु ते किरीटिनी महावज्रे सहस्रन्यनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चैन्द्री नारायणी नमोस्तु ते शिवदूती स्वरूपेण हतदैत्य महाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमोस्तु ते दंष्ट्राक्रालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुंडे मुंडमथने नारायणी नमोस्तु ते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोस्तु ते मेधे सरस्वती वरे भूति बाभ्रवी तामसी नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमोस्तु ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिस्मन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तु ते एतत्ते वदनन् सौम्यन् लोचनत्रयभूषितम् पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमोस्तु ते ज्वालाक्रालमत्युग्रं शेषासुरसूदनम् त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोस्तु ते हिनस्ति दैत्यतेजांसी स्वनेनापूर्य या जगत् सा घंटा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुतानेव असुरासरिग्वसा पंकचर्चितस्ते करोज्ज्वला शुभाय खड्गो भवतु चंडिके त्वा नता वयम् रोगान् शेषान् पहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वामाश्रिताना न विपन्नराणा त्वामाश्रिता ह्याश्रयता प्रयान्ति एतत्कृतं यत्कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषा देवी महासुराणाम् रूपैर्नेकैर्बहुधात्ममूर्ति कृत्वाम्बिके तत्प्रकृति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे श्वाद्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या।
मम त्वगर्तेति महान्धकारे विभ्राम्यत्येतदितीव विश्वम्। रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्च नागा यत्रार्यो दस्युब्लानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम्। विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वम्। विश्वात्मिका धार्यसीति विश्वम्। विश्वेश्वन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः। देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीते नित्यं यथासुरवधाद्धुनैव सद्या पापानि सर्वजगता प्रश्मन्नयाशु उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान् प्रणताना प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामीडे लोकाना वरदा भव। देव्युवाच वरदाः सुरगणा वर यन्मनसेच्छत् तं वृणुध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम्। देवा ऊच सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशन्। देव्युवाच वैवस्वतेन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्यावुत्पत्स्येते महासुरो नन्दगोपगृहे जाता यशोदागर्भसम्भवा ततस्तो नाश्येष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनर्प्यति रौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तांस्तु दानवान् भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान् रक्ता दन्ता भविष्यन्ति दाडिमी कुसुमोपमाः ततो मा देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सत्तं रक्तदन्तिकाम् भूयश्च शतवार्षिक्यां नावृष्ट्यां नम्भसि मुनिभ्यः संस्तुता भूमौ सम्भविष्याम्ययोनिजा ततः शतेन्नेत्राणा निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षिमिति मां तथा ततोऽहमखिलं लोकमात्मदः समुद्भवैः भरिष्यामि सुराः शाकैरावृष्ट्यः प्राणधारकैः शाकम्भरीति विख्याति तदा यास्याम्यहे भुवि तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम्। दुर्गा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति। पुनश्चाह यदा भीम रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीना त्राणकारणात् तदा मां मुन्यः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्तया भीमा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति। यदारुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधा करिष्यति तदाहं भ्रामरण रूपं कृत्वा संख्यैषट्पदम् त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरम्। भ्रामरीति च मा लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वथा इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याः करिष्याम्यरिसंशयम्। इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये देव्याः स्तुतिर्नामैकादशोऽध्यायः।